अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 601 ऑपरेशन रिसर्च का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और ग्रैंड क्विज़ेज़ और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप among the activities are indicated through. The answer is dummy. The answer is this. Next question is, if a firm produces its own goods instead of purchasing the same from outside source, then the cost of resetting the equipment for production may refer to. मैंने तो इसका एटम कॉस्ट लगाया था लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, इसे कंफर्म कर लीजिएगा. Next question is, if the demand of an atom is occurred in the period of stock out and it is satisfied at the beginning of the next cycle, then such type of problem will discuss under which of the following. The answer is purchasing model with shortage, यानी out हो गया. Except the economic order quantity, the value of Q static will result in higher cost. The answer is higher cost. Next question is, which of the following is an operation research process? The answer is solution. Next question is, the first step in the application of dash is to develop a network representation of the project plan. The answer is CPM, critical path method. The answer is this. If an activity has non-zero value of total float such that it can be further delayed to the length of leg without delaying the project, then it is said to be non-critical. The answer is non-critical. Next question is, the simplex method is a dash for solving linear programming problem. The answer is computational procedure, algorithm. Next question is, while finding the critical path in the phase of early start and early finish computations, we start from dash event and proceed calculation from left to right up to the final event. यानी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फर्स्ट से स्टार्ट किया यानी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे आप. ये द आंसर इज दिस. The graph of Wilson's model, purchasing model with no shortage, is of the dash shape, sawtooth. The answer is this. Question number 13 is, while solving a network flow problem by using PERT, the area under the normal distribution curve gives the probability of completion. The answer is this. Which of the following correspond to the practical limitations of available resources while modeling a real life situation into a linear program? The answer is constraints. Next question is, if for path 135 4 time is 5 plus 3 is equal to 8 days, for path 1 2 3 4 time is 6 plus 7 plus 3 is equal to 16 days, and for path 1 to 4 time is 6 plus 6 is equal to 12 days, then which of the following is true? The answer is 1 2 3 4 is a critical path. Which of the following is the objective of project management by using PERT and CPM methods for any project subject to resource constraints? The answer is to minimize the total project cost. The answer is this. Question number 17 is, the economic order quantity in case of manufacturing model without shortage can be transformed into purchasing model without shortage by which of the following substitution? The answer is when demand rate approaches to infinity. Next question is, if the economic order quantity and the annual demand of a product are 2500 and 5000 units respectively, then without any shortage the time between the consecutive orders is dash months. The answer is 0.50 months. Next question is, when we have to manage a project with available resources, we have the option of resource leveling. Here the resource availability is less than the maximum resources required for an activity, then it is feasible to delay the job having. वैसे इसका या तो होगा लार्जेस्ट फ्री फ्लोट आएगा या डमी ब्रांच आएगा, मुझे यही लग रहा था. मैंने तो वैसे आई थिंक कौन सा लगाया था मुझे याद ही नहीं है, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आर 2500 and 5000 units respectively, then without any shortage the number of orders are 2.
The answer is this. Next question is, in project management critical path method is based on dash times deterministic, यानी कुछ वैल्यूज नोन होती हैं. आप डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ LP by assuming and initial solution which later on modified through well defined steps. The answer is algebraic simplex. Next, 23 question number 23 is, while finding the critical path in the phase of late start and late finish we start from dash node, the computations are performed from right to left up to the beginning event. जब हम बात करते हैं स्टार्ट की बात करते हैं, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश की बात करते हैं, तो हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं और ये बैकवर्ड जाता है. और जब हम लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश की बात करते हैं तो बैकवर्ड मूव करते हैं, यानी लास्ट वाला जो है आप उसको चूज़ करोगे, स्टार्ट करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज, इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफ़ द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ नेटवर्क आर डिलेड देन क्या होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज, मोर रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड, प्रोजेक्ट फिनिश टाइम विल हैव टू एक्सटेंड. द आंसर इज ऑल above choices are equivalent. Question number 25 is, the mathematical technique which is used to solve a wide class of problems such as allocating scarce resources among competitive activities is known as. The answer is linear programming model. Next question is, in the relation of finding the expected time of an activity, most likely time is weighted more than the other optimistic and pessimistic times, and these exist in the ratio of 6:1. 6:1. Convex set is the collection of all feasible solutions. Next question is, which of the following would be the objective of the revenue in the production of cell phones? यानी revenue बढ़ाने का क्या होता है, revenue हमेशा बढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, maximization. The answer is maximization. Next question is, about which of the following it is true that they only signify with the passage of time the beginning and ending of some activities under no consumption of resource, यानी zero time duration लेता है, जो dummy लेता है, dummy. Next question is, by putting the replacement rate R infinity and the shortage cost C4 infinity in the economic order quantity of manufacturing model with allowed shortage, then the result is EOQ of Wilson's model. The answer is this. Next question is, in a network flow diagram, if two jobs A of ij and B of ik and of 4 and 3 days duration finish late simultaneously on 7th day, then on which of the following day the event I will finish earlier. इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, वैसे मैंने इसका 3 लगाया था, लेकिन कैलकुलेट कीजिएगा. Okay जी, next is, which of the following is true about the manufacturing model without shortage? The answer is demand rate less than replacement rate. So we have completed of 30 questions MTS 601. I hope आप लोगों की हेल्प हो जाएगी. ज़्यादा कलेक्शन है तो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मैंने तो जो कंफर्म नहीं थे मुझे वो बता दिए है, लेकिन जहाँ पर भी देखा करें अपने आंसर्स कंफर्म किया करें. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.